Jai Guruji to everybody, to all the Sangat all over the world who are listening, who are not listening. Uh, I don't know what to say today, and sum up all the things in 15 minutes. But Guruji always said, do your satsang in short which kitta karo. And I always said, and he, with that short thing, I just remember that once when he was in his bodily form, he told me, तू ना एम ब्लॉक GK1 मार्केट जाके ना हर दुकान पे सत्संग करना है, हर दुकान पे जाके. एंड आई सेड हाँ जी गुरु जी. एंड ही वुड सेंड मी एंड ही टोल्ड मी दैट एक एक दुकान जाके और शॉर्ट विथ सत्संग करना है, 2 लाइना था. एंड मैं हैरान होती थी. मैंने कहा मैं 2 लाइनों में गुरुजी के बारे में कैसे मैं बता सकती हूँ कि गुरुजी क्या है, कौन है, मैं कैसे बताऊँ. तो एक शॉप पे मैं गई और वहाँ पर मैंने उनको कहा कि ऐसे गुरुजी हैं. एंड आई स्पोक फॉर आई थिंक गुड 10 minutes अबाउट गुरुजी. एंड आई थॉट दैट येस ही दे लूजिंग इंटरेस्ट और वट एवर इट इज़. एंड इनिशियली वो आई थिंक 2005-2006 की बात है. एंड मेरे को समझ नहीं थी, हमें कुछ पता ही नहीं था कि सत्संग क्या होता है. और गुरुजी कहते 2 मिनट 2 लाइनों का सत्संग करना है. और इस चक्कर में मुझे कन्फ्यूजन हो. किसी से पूछ भी तो नहीं सकते थे तब, तो किसी से बात नहीं कर सकते थे, मतलब पता ही नहीं था, किसी के फ़ोन नंबर्स ही नहीं पता होते थे हमें तो. एनीवे, आई यूज्ड टू गो टू एम ब्लॉक मार्केट एंड देन सडनली इट स्ट्राइक मी दैट आई हैव टू टू 2 लाइनों में कैसे सत्संग करूँगी. तो आई यूज्ड टू गो टू एवरी शॉप आई वुड गो एंड आई वुड से ऐसा है कि इस धरती पे ना एक रब आए हैं मेरे, मतलब इतने सुंदर भगवान आए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग दर्शन करो और जैसे मैं ब्लेस हुई वैसे आप भी ब्लेस हो जाओ. दैट वाज ऑल आई वुड से. एंड देयर वाज नो जय गुरु जी एट दैट टाइम. वी नेवर सेड एनीथिंग जय गुरु जी, और किसी से कुछ कहते ही नहीं थे. इवन संगत को जब हम एड्रेस करते थे तब भी हम नमस्ते करते थे. गुरु जी को भी नमस्ते करते थे और संगत को भी नमस्ते. सो ऐसे कारवां चलता रहा. एवरी टाइम आई वुड गो टू एम ब्लॉक मार्केट एंड I would go and do a satsang to each and every shop, whether it was an employer or it was an employee. चाहे वो एक क्लीनर ही क्यों ना बैठा हो, बट आई वुड गो एंड डू अ सत्संग एंड just tell him that Guruji is there. And then I used to, of course, tell them where this Guruji is sitting in Empire State and what are the timings and everything. Little small things of the do's. And then, my husband would always say that, why? तुम क्यों जाती हो एम ब्लॉक मार्केट, अच्छा लगता है ऐसे दुकानों दुकानों में जाके सत्संग करना. और यूँ कैसे कैसे लोग होते हैं दुकानों में, कोई जाके कोई सत्संग करता है. And he wouldn't understand, and he would, we would have a small little fight. And he said, I'm going to talk to Guruji. I said, no, 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 don't talk to Guruji, I will not do it. So आदत से मजबूर, I would just go to him block market to, in the pretext of buying something. And I would of course go and do the satsang each and every shop. And कुछ ना कुछ, क्योंकि market बड़ी है, so you could not cover that in entire one day. So chalta raha. And the day we used to have a little tiff about it, and it was my day to go to Guruji. He would ask me, अच्छा तू एम ब्लॉक गई सी. मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. सत्संग कितना सी. मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. And he would smile and I would smile. I said, this is how our thing started about this. And I used to wonder that before leaving his chola, he told me that एन जगह मैं ना एम ब्लॉक मार्केट जाना है उन्होंने ब्लेस करन वास्ते. तो आई सेड हाँ जी गुरु जी. एंड 2-3 इंस्ट्रक्शंस ही गेव मी. वन वाज दिस. सो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी. एंड when Guruji left his chola, I didn't know, I didn't understand a lot, many things. We were all scattered, and not scattered in the sense, yes, the whole Sangat got scattered, in fact. Everybody, we couldn't find anybody anywhere. There was nothing. You could not contact anybody, you could not go to Bada Mandir because, or you could not go to Empire State. There was so much of chaos after Guruji left his chola, and we didn't understand what to do.
So in 2007, Guruji gave me a seva to do satsang, and he didn't give me any seva of this sort that oh jaake satsang karo, mere dream mein aaye, mainu ken dene Guruji. I'm sorry to use the word ken dene Guruji. I don't like the. I mean, I'm no authority to say all those things, but you cannot put Guruji's name and say Guruji ken dene. It is a very, a word of Guru is so powerful and so pure. You cannot use that word just like that. Guruji Kendene, there are some distorted statements which come, from all over. And how many statements, how many can I, rectify or whatever, try to change? But his hukum, when his hukum comes, it is very clear. And if that hukum comes, it is clear not only for the for me, or any sangat, but it is for the entire sangat. There will be a clarity of the hukum. I will not have doubts if Guruji's hukum is there. I will never ever have doubts about that hukum because it is coming from the source. But if I write a hukum and if I write something and I say, okay, this is what Guruji is, ye Guruji कहते ने, ये Guruji कहते ने, ऐश कर, तेरा सब अच्छा होएगा, तेरा कल्याण कितना. We are nobody to say tera kalyan kitta from Guruji's side to the Sangat. That Guruji is going to do on his own. He knows how to do it, when to do it, and what to do about it. So हम जो ये Guruji के words डाल के, you just say it's a thought of the week and your feelings of the week or feelings of the day. Please put it like that. Why just say Guruji कहते ने ऐसा करो, Guruji कहते ने वो करो? Never ever do that because he's so supremely powerful. We cannot match his words, or we cannot even come to think of it. He is the entire world. He controls so many universes. But I'm very grateful that Guruji came into our lives, and I'm very grateful that I was born, and I'm very grateful that the problems came over in my life, and I'm very grateful that had all these things not happened, and I wouldn't have met Guruji. And I thank Guruji also that he was born. वो पैदा हुए, अगर वो पैदा नहीं होते तो हम यहाँ ना तितर बितर से होते, द स्मॉल लिटिल फ्राइज, और क्या कहते हैं ना, हम कीड़े मकोड़े थे, हमारी ज़िंदगी कीड़े मकोड़े के रह जाती. हमें अकल ही नहीं आती, हमें समझ ही नहीं आती. थोड़ी बहुत जो समझ गुरुजी ने सबके अंदर डाली है, वो सब इसी वजह से है कि वो आए इस धरती पे. अगर नहीं आए होते ना तो हम बहुत ही हमारा बुरा हाल होता, एंड वी वुड हैव बीन स्टक फॉर एवर, एंड वी आर एंड ऑल द संगत एंटायरली. प्लीज़ डोंट बी द क्राउड, बी द ट्रू संगत. भीड़ में रहना तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि सब मानते हैं, सब जानते हैं, बट एक संगत बनना बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जैसे मैंने सुना था एक सत्संग में, it's a huge responsibility, and I love the fact that I'm Guruji's Sangat, and I proudly say that मैं Guruji की हूँ. And when I meet somebody, आप Guruji वाले हो, so our definition of a family changed from a surname of ours to आप Guruji वाले हो, हाँ भाई Guruji को मानते हो. एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. एक होता है गुरुजी को मानना, और एक अनदर लेवल है कि गुरुजी से जुड़ना. मानते तुम बहुत सारे जब हम जहाँ जहाँ से भी आए मानते तुम बहुत भगवानों को, माता रानी को मान लिया, ये मान लिया. और एंड आई वाज सेइंग दैट गुरुजी सेड दैट दी एक होता है मानना, बहुत सारे भगवानों को मानते हो, इसकी भी पूजा कर लो, उसकी भी पूजा कर लो. एक होता है जुड़ना, तो आप एक ही के साथ जुड़ के पार हो जाते हैं. देर इज़ नो अदर वे, देर इज़ नो अदर वे. यू कैन सेल इन 10 different boats, or even two boats. If you sail in two boats, you cannot sail in two boats at the same time. So you have to choose one through which you can sail through in your life, and this journey is a beautiful journey with Guruji. And I've always believed that in my heart, that if Guruji wants to do something, he will let you know. If he wants that you do his seva, he will let you know. But then you don't have to
go on a radio and say, oh, मेरे को गुरुजी ने ये सेवा दी, oh, I'm Guruji's brand ambassador, oh, I'm Guruji's caretaker of the mandir, oh, I'm Guruji's this, I'm Guruji's that. No, if you do the seva, you have to do it quietly. Do, even if you're visible for to the seva, but then you don't have to go about saying it. Like when Guruji told me to do satsangs in 2007, he didn't tell me verbally that way कि तू कर सत्संग, ये तेरी सेवा है, तूने संगत जोड़नी है and all that. No. When I started the satsang, I thought मैं तो बिखर जाऊंगी ऐसे. I didn't know any sangat, I didn't know anybody, and nobody knew anybody anyway. So when I started doing this, and I took a call inside my heart that every Friday I will do a satsang, and that's it. I don't know anything else. So every Friday when I started, which was 1 hour, and I didn't know nothing. I played Shabad. We didn't have any Shabad Kirtan also. कुछ नहीं पता कि कैसे सजानी है गद्दी, कुछ नहीं. एक फ़ोटो रख दी, कड़ा प्रसाद बना दिया, एक सोफ़े पे रख दी गुरुजी की फ़ोटो, कड़ा प्रसाद बनाया, and that's it. And then I didn't know anything. Slowly over the time, we changed the timing to from 11 o'clock to 12:30. 2-3 आसपास के लोग बुलाए. फिर जो मुझे टक्कर जाता था, कहीं मेरे को संगत दिख जाती थी, 4 लोग. That is all we used to sit with. There was no satsang happening. Everybody was in a kiosk. Somebody was running there. I don't know where to Dwarka. Somebody was running to this place because nobody knew. There was no direction. So that is how we started the Guruji. That was my call at the initial level, but then I suddenly remembered one day that yes, I had asked Guruji, Guruji या तो मुझे लंगर की दे दो सेवा किचन में, जब गुरुजी चोले में थे, या मुझे सत्संग की सेवा दे दो, मेरे को घर घर जाके बोलना है आपके बारे में और बताना है कि लुक हुज कम लाइक एन एक्साइटेड पर्सन, जैसे बावला सा होता है कि देखो तो सही कौन आए, इसके बाद पता नहीं कब खजाना मिले. ही इज़ अ ट्रेजर, ही इज़ सच अ ब्यूटिफुल डिवाइन ट्रेजर. I don't know, this is the only lifetime I know. So I wanted to grab hold of everybody and take them to Guruji. And I did take all my रिश्तेदार, my friend circle. जोड़ा तो कोई भी नहीं, पर उनके आगे आज जो मेरे फ्रेंड्स के रिश्तेदार हैं वो जुड़े हुए हैं. जो मेरे रिश्तेदारों के आगे रिश्तेदार हैं या extension life extended, the extended families, they have also got connected to Guruji. And you will not believe that the friends I was connected to, they're no longer my friends anymore. Why? Because वो अपने आप छंटते गए. I didn't have to do anything. It just happened on its own. So in short, I just feel that stay connected to Guruji. The vehms should be out. Please don't use Guruji's name just like that. Just like that. No, you cannot use his name just like that. You cannot, his words, you cannot, जैसे गुरबानी को कभी भी तोड़ मरोड़ के नहीं, पेश किया जाता. ये एक क्या कहते हैं, मर्यादा से परे होता है. इसी तरीके से जो भी गुरुजी के वचन है, जिस भी संगत से आप सुनते हो, ओल्ड संगत, न्यू संगत, आई डोंट नो अबाउट ओल्ड एंड न्यू संगत, बट येस, द पीपल हु मेट गुरुजी, देयर आर सर्टेन वचन्स which गुरुजी said to them. Catch hold of those vachans. Do not just go and rephrase everything. Cut to cut and understand those vachans. It is not that you don't have to understand it, because गुरुजी बातों बातों में बहुत कुछ कह जाते थे और आपको कैच करनी पड़ती थी. इसी तरीके से जो आपको सत्संग सुनाए गए, उनकी बातों में से आपको कैच करना है. एंड नॉट ओनली जस्ट गेट कनेक्टेड टू गुरुजी एंड फील डिवाइन, बट to feel that divinity, you have to change yourself also. You cannot just say, okay, अरे गुरुजी कर देंगे अपने आप. गुरुजी कहते हैं थाली में रोटी तो मैं परोस दूंगा, पर खानी तो तू नहीं है ना, तोड़नी भी तूने है, मुंह में डालनी भी तूने, डाइजेशन भी मैंने करना है. अब मैं बोलूँ गुरुजी तोड़ के भी मुझे खिलाओ, डाइजेशन भी आप करो. You can't do that. He will give you a beautiful प्लेटफॉर्म, अ ब्यूटीफुल सत्संग, एक बड़ा अच्छा माहौल है, और वो भी आपको तैयार करना है माहौल उनके आने का. फिर वो आपको माहौल देंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे, बोल चल, ही विल जस्ट गिव यू अ नज एंड अ पुश टू मूव अहेड इन योर लाइफ. सो जस्ट उनसे जुड़े रहो, उनको खूब सारा प्यार करो, उनसे अपने दिल की सारी बात कर सकते हो. जितनी भी मैंने संगत का सुना है जो गुरुजी से मिले, वी हैव सारों की एक ही वॉइस है. मैंने कोई भी सत्संग ऐसा नहीं सुना
जो एक दूसरे से अलग हो, बेसिक थिंग वही रहती है हमारी, because that is what we have experienced, the sangat we've met Guruji, and we have to learn from each other, and in that learning process हमारा connection बहुत strong होता है, divine होता है गुरुजी के साथ. So I feel प्लीज़ गो हैड लिसन टू ऑल द सत्संग्स. एंड मैं तो खुद सत्संग की भूखी हूँ. कोई नई संगत या जो संगत अभी आई है, चाहे वो कल आई हो, वो अपने कोई चीज़ शेयर करती है गुरुजी के बारे में, उसके कनेक्शन के बारे में, आई एम एक्साइटेड लाइक अ बेबी. आई फील सो हैप्पी. सो ऑन दैट नोट, जय गुरुजी टू एवरीबडी, सारी संगत को. एंड बहुत सारा प्यार और बहुत सारी रिस्पेक्ट एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल द संगत. बिकॉज अगर संगत की रिस्पेक्ट नहीं होगी तो गुरु की रिस्पेक्ट भी नहीं होगी. यू कीप ऑन रिस्पेक्टिंग गुरु जी, एंड गुरु जी का फ़ोटो को बड़े अच्छे संभाल के रखते हो, बट अगर गुरु की संगत की निरादरी करोगे एक भी बंदे की, तो गुरु की निरादरी होती है और गुरु जी को अच्छा नहीं लगता. दैट इज़ वॉट ही इज़. ही बिकॉज हिज love for his sangat is well known. Whether all the old sangat say that his how much he loved his sangat. So you remember even today he loves us, and in each of the sangat, चाहे टेढ़ी है, मेढ़ी है, छोटी है, मोटी है, कुछ भी हो, I don't know, but what I feel is that वो अपनी जर्नी पे आया है, तो यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट टू देम. चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे वो कौड़ा है, चाहे वो मीठा है, डजेंट मैटर. Let him get connected to Guruji on his own terms and let him do it, from within. Don't start scolding him. So I feel that आत्मा बड़ी दुखी होती है, तो और दुखी नहीं करते हुए खूब प्यार से गुरुजी से जुड़ो. Respect each other, love each other, give space to each other. Don't get into each other's houses just because you're Sangat. Jai Guruji on that note, and lots of love to everybody, and Namaste to Guruji.